नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास. So today our topic of discussion is the chapter second of science biology class 10, that is life process. And today there are four life processes in your syllabus, and today the topic of our discussion is respiration, the important life process, that is respiration. Okay, so you have idea of what respiration is. So definition wise, if we discuss, respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. Okay, so in general we can say that respiration is a process by which the living organisms get energy by the breakdown of the food or glucose. Okay, there may be the use of oxygen, there may not be the use of oxygen. Get it? Earlier we have discussed nutrition and digestion, different steps of digestion we have discussed. Okay, so you might understood that the energy is not derived from digestion. Digestion is the mean of converting complex substances into more simpler forms, more simpler molecules. But now the living organisms get energy by the process of respiration. Okay, so what happens in the body of living organisms? Actually many kinds of biochemical reactions they are carried out in the body, and some are breaking down of complex molecule, and some are synthesis of the complex molecules. Okay, synthesis of molecules from simpler forms. So this synthesis and this breakdown is continuously going on in the body. Okay, these are called metabolic reactions. Okay, breakdown means catabolism and synthesis means anabolism. And one thing ध्यान रखिए कि जब भी बॉडी को एनर्जी स्टोर करनी होती है बॉडी को, तब वो बॉन्ड बनाकर बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है. एंड द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी इज ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. ओके, सो जब भी एनर्जी स्टोर करनी होती है तो बॉन्ड फॉर्म करके बॉडी में स्टोर की जाती है. एंड व्हेन एनर्जी इज टू बी यूटिलाइज्ड, देन द बॉन्ड्स हैव बीन ब्रोकन डाउन. ओके, सो जब हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, रेस्पिरेशन के बाद जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, देन व्हाट इज बीइंग डन बाय द बॉडी? That energy is stored in the form of ATP. Okay, so the energy released during respiration is used to make ATP molecules, that is adenosine triphosphate. ATP का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ओके, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी. जिसे हम बाजार में जाते हैं एंड वी गिव द करेंसी एंड टेक वॉट एवर वी नीडेड एज पर द वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट आर्टिकल. ओके, जैसे हम पैसे देकर चीज़ें लेते हैं, इस तरह से ये भी हमारे एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की करेंसी है. ओके, जैसे बैंक में अकाउंट बैलेंस होता है, उस तरह से हमारे बॉडी में ATP का बैलेंस क्रिएट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है एनर्जी स्टोर करने के लिए. ओके, दिस ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ADP मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रेडिकल को ADP के साथ रिएक्ट करके ATP में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है. दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी. देन एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स in the form of ATP molecules. When the cells need energy, ATP is broken down in the presence of water to form ADP and energy is released. Okay, so जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो स्टोर्ड ATP है इसका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ADP के फॉर्म में, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, इट गिव्स एनर्जी आउट and here it takes energy in this process. okay, so जब एनर्जी स्टोर करना होता है रेस्पिरेशन के बाद, तो ADP में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है, फॉस्फेट रेडिकल, और ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है. बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ATP का ब्रेक डाउन होता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द सेल टू कैरी आउट इट्स
other life processes and um, daily processes. Okay. Now, types of reactions. So, uh, earlier we have discussed in this process energy is gained, but there are many pathways of breakdown of glucose and getting the energy. Okay, somewhere in some processes oxygen is used, in some kind of respiration oxygen, there is no use of oxygen. Okay, so on the basis of use of oxygen, there is respiration is of two types. One is aerobic respiration, and the name tells itself that this aerobic respiration takes place in presence of oxygen. It produces more energy. The end product are carbon dioxide, water, energy. It takes place in most organisms. Okay, most complex organisms, they carry out this mode of respiration, that is aerobic respiration. Okay, in this mode of respiration more energy is derived and complete digestion of glucose takes place, complete breakdown of glucose takes place. Glucose is a 6 carbon molecule, and here the end product of aerobic respiration is carbon dioxide, CO2. Okay, so C6H12O6 glucose converted into CO2 means 6 atom glucose molecule converts into single carbon atom carbon dioxide molecule, means complete breakdown of glucose takes place here in aerobic respiration. That's why more amount of energy is released during this aerobic respiration. Okay, इसका आप सिंपल सा अगर फ्लो चार्ट बनाया जाए इन द इक्वेशन फॉर्म, देन व्हाट हैपन्स, दिस glucose is first converted into pyruvate. This is a molecule somehow simpler than glucose. Glucose is 6 carbon atom molecule. This is just half of the glucose. It is 3 carbon atom molecule. Okay, C3 इसमें 3 carbon atoms होते हैं. So first glucose is broken down into mediocre compound, that is pyruvate, and this process takes place in cytoplasm of the cell. Okay, and there is no need of oxygen for this. There is no need of oxygen for converting glucose into pyruvate, and it takes place into the cytoplasm. Then after this pyruvate enters mitochondria. Okay, in aerobic organisms which perform aerobic respiration, first glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm, and then this pyruvate is diffused into the mitochondria, and later the second step of aerobic respiration takes place here, where this pyruvate is oxidized, it is broken down in the presence of oxygen, and in this process the end products are carbon dioxide and water, and energy is released during this process. It is the main process which takes place in human beings also. Okay, many animals, higher animals, mostly all the animals and plants, higher organisms, this kind of process takes place. Okay, so more amount of energy is released. आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज C6H12O6 first is converted into 3 carbon molecule compound, that is pyruvate, and ultimately it converted broken down into carbon dioxide and water. Okay, so this is aerobic respiration because oxygen is used here. Okay, and where oxygen is used, not in the cytoplasm, it is used in the mitochondria on the second phase of this reaction. Got it? Next mode of respiration is anaerobic respiration. Okay, anaerobic, the name itself is explaining all things. Anaerobic means without the use of oxygen. This anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. It produces less energy. The end products are lactic acid or ethanol, carbon dioxide, and energy. It takes place in muscle cells and yeast. Okay, yeast is a fungi. Yes,
यूनिसेल्युलर फंजाई। सो ये किस में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? बहुत से माइक्रोब्स में होता है मोस्टली जो है। mainly it is given that it is given this is the metabolism of this is the main process of yeast. Okay, and in our muscle cells also. Okay, muscle cells of all the chordates, it also carry out this kind of respiration is also being carried out. In anaerobic respiration, in muscle cells glucose is converted into pyruvate, and in the absence of oxygen pyruvate is converted into lactic acid and energy. Okay, so what happens in this mode of respiration? There are two pathways of anaerobic respiration. We have seen this aerobic respiration and the one pathway of this aerobic respiration. Here anaerobic respiration means which is being carried out in absence of oxygen, and here two pathways are there. This one pathway, this takes place in muscle cells of chordates, and this another one which is being carried out in the body of yeast. So what happens in muscle cells of humans and other chordates? Actually other mammals. So this glucose is first converted into pyruvate. Okay, ये सभी में होगा, सभी पाथवेज में पायरुवेट ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जरूर बन रहा है. ओके, सो 6 कार्बन एटम ग्लूकोज मॉलिक्यूल फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट which is 3 carbon atom molecule, and it takes place in cytoplasm. Okay, cytoplasm of muscle cell. And then in the absence of oxygen, this pyruvate is converted into lactic acid and energy. This lactic acid is also 3 carbon atom molecule. Okay, and energy. So in this process energy is being released, but the amount of energy is very less. Why? Because complete breakdown of this glucose does not take place here. Got it? कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा. यहाँ पर एरोबिक में हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है ये CO2 में सिंगल कार्बन एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है ये सिंगल कार्बन एटम मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ. तो क्या हुआ कि इसमें एनर्जी का अमाउंट जो है वो एनर्जी कम रिलीज होती है. ओके, लेटर जब प्रॉपर, अच्छा ये क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन? It is the mechanism of body. When the body is doing some heavy exercise or some heavy kind of work and more amount of energy is needed by the body, then what happens? This supply of energy does not fulfill the requirement. The supply of energy by aerobic respiration from our lungs to the cells, the demand of oxygen is more, and देर इज़ अ लिमिट. एक लिमिट है कि कितना हमारा बॉडी लंग्स जो है वो ब्लड एंड लंग्स ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकता है सेल्स में. तो उस लिमिट में जो एनर्जी बनती है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है नॉर्मल प्रोसेस से. तो क्या होता है, वक्ती तौर पर एक टेम्परेरी प्रोसेस के तौर पर हमारी मसल सेल्स क्या करती है, मैमल्स की मसल सेल में ये एक स्पेशल फीचर होता है कि जब, क्योंकि मैमल्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, उन्हें और उनका वार्म ब्लडेड भी होते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. ओके, सो उन्हें और ज़्यादा अगर मसल्स को एनर्जी चाहिए तो ये एक टेम्परेरी पाथवे यूज़ कर लेती है मसल सेल्स, और वो ग्लूकोज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होने के कारण एरोबिक रेस्पिरेशन जितना पॉसिबल होता है उतना तो होता ही, उसके साथ साथ इस तरह से एक एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होते जाता है कि उसको पायरुवेट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती ऑक्सीजन में, तो विदाउट ऑक्सीजन वो पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है. और इसमें भी एक थोड़ा सा अमाउंट एनर्जी का 2 ATP पर ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू लैक्टिक एसिड 2 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड. तो थोड़ी सी एनर्जी वक्ती तौर पर मिल जाती है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, यू हैव ऑब्जर्व्ड मसल क्रैम्प्स. ओके, व्हेन यू एक्सरसाइज हैवीली आर डूइंग सम हैवी एक्टिविटी, देन व्हाट हैपेंस, कुछ समय के बाद मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं. व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट क्रैम्प? बिकॉज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स. जब मसल सेल में लैक्टिक एसिड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है एंड इट पेन्स. ओके, देन व्हाट हैपेंस व्हेन दैट वर्क इज ओवर, then what happens, during the passage of time we breathe faster after doing heavy exercise.
फास्ट ब्रीथिंग होती है, जिससे क्या है कि बाद में ऑक्सीजन मिलती है और इस लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर से एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह से ये टेम्परेरी मैकेनिज्म होता है वक्ती तौर पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ओके, सो दिस pathway, the second we have discussed, pyruvate is converted into lactic acid. Here end product is lactic acid. It takes place in the muscle cells of mammals. Okay, the third pathway and the second mode of anaerobic respiration is it takes place into yeast cells. Okay, what happens here? Glucose is first converted into pyruvate, the intermediate compound, and then this pyruvate, in the absence of oxygen, it converted into ethanol and carbon dioxide. Okay, so in anaerobic mode of respiration in yeast cell, the end product is ethanol, the alcohol, and carbon dioxide. It is also called ethyl alcohol. Okay, and this process is called fermentation, which takes place in the bakery. Okay, the breads and the cakes, the dough is swallows is rise up due to this evolution of carbon dioxide. Okay, and so here you see these two kinds of two modes of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, so next is different pathways. In brief, once again we see this. Sorry. In cytoplasm, first glucose is converted into pyruvate. Okay, and then there is the fate of pyruvate depends on whether where is it. If it is in yeast cell, what happens in yeast cell? This pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide without the use of oxygen. Okay, it is the anaerobic respiration takes place in yeast. Then second pathway of glucose breakdown, glucose is first converted into pyruvate and then in lack of oxygen. Okay, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है अदर पाथवे से, मैमल्स में, ह्यूमन की मसल्स में क्या हो रहा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में दिस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड हियर आल्सो. In both this pathway, the amount of energy is less. But in third pathway, where oxygen is present, it takes place in mitochondria. Just focus on this because sometimes, many times the question have been asked between the differences of different pathways of glucose breakdown and differences between aerobic and anaerobic respiration. So you have to mention this, that this anaerobic mode of respiration, these takes place in cytoplasm, and aerobic phase it takes place in mitochondria. Okay, here this glucose first converted into pyruvate and pyruvate is ultimately broken down into carbon dioxide and water. Okay, and more amount of energy has been released. So I think you have understood the three pathways of glucose breakdown. Okay, yes, two modes of respiration, aerobic and anaerobic, and in this, under these two modes of respiration, there are three pathways of glucose breakdown given in your syllabus. Okay, it is very simple. Go through this flow chart. It is given in your textbook also. Okay, so go through this. It is very interesting. So next we will discuss the respiration in humans. Okay, you know, for every kind of life activity, life process, we have been given a specific specialized ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होता है हर लाइफ एक्टिविटी के लिए. सो रेस्पिरेशन के लिए भी ह्यूमन बींग्स में एक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. ये आप देख रहे हैं जो ब्रीथिंग की, यहाँ पर दो रेस्पिरेशन के दो फेज है. फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज in simple we say breathing. Okay, and second is cellular respiration, which we have discussed here. In this phase, what happens in breathing? Breathing just refer to the exchange of gases from the surrounding by the body. Okay, body, अगर humans की बात करें, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ओके,
सो ये हो गया ब्रीथिंग। इसके लिए पूरा ये सेटअप है, पूरा ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये। और इसके बाद जो ऑक्सीजन हमने ली ये ब्लड से हर एक सेल में जाती है, और उस सेल के अंदर जो ग्लूकोज ऑलरेडी स्टोर्ड है वो भी ब्लड से ही पहुंचाया गया। डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज गया स्मॉल इंटेस्टाइन विलाय से एब्जॉर्ब होके जो एसिमुलेट होके जो ब्लड पहुंचा है हर एक सेल में। इसके बाद यहाँ से ब्रीथिंग के बाद ऑक्सीजन पहुंच रही है हर एक सेल में। फिर सेल के अंदर क्या हो रहा है, यस, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज टेकन प्लेस देयर। दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। okay, so in human respiratory system, which organs are involved? Nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and whole total it is called the bronchioles. It is lungs and diaphragm. Okay, one by one we will see these, what kind of organs are involved here in respiration. So first of all, nasal cavity, you know this nose and nasal cavity. The nasal cavity later opens into pharynx, and below the pharynx larynx is there. Larynx, we can say that uppermost part of the trachea. Okay, and what is trachea? This is windpipe. After this the larynx, the pipe is there. थोड़ा सा याद कीजिए, न्यूट्रिशन में हमने फूड पाइप की बात की थी, ईसोफेगस की। ईसोफेगस के पैरेलल एक विंड पाइप भी होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया। ओके, एंड हियर यू सी दिस ट्रेकिया, इट इज फर्दर बाइफर्केटेड, it divides into two branches, and these each of the branch is called bronchus. What is it called? Bronchus. Here singular is bronchus, both the branches combinedly they are called bronchi. So singular is bronchus, plural is bronchi. Okay, so once again, this nasal cavity, pharynx, larynx, trachea. Trachea later divides into two branches, the bronchi, the right bronchus and left bronchus. Okay, and further these bronchi, this each bronchus, it splits into many branches. These are called bronchioles. Got it? These are called bronchioles. सो ब्रोंकाई इट बाइफर्केट्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पर आप ये ट्री की या रूट्स की ब्रांचेस की तरह जो देख रहे हैं, दीज आर ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स आर लेटर फर्दर बाइफर्केटेड, फर्दर स्प्लिट इनटू further bronchioles. So it may be also named as primary bronchiole, tertiary, secondary bronchiole, tertiary bronchiole, like this. Okay, and at the terminal bronchiole, at the end of each bronchiole, there is a bubble-like structure. Bubble-like structure which is called alveoli. Okay, it is called alveoli. यहाँ पर इस तरह के ये यहाँ पर जो हैं हर एक ब्रोंकस, दिस टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पर यहाँ पर इस तरह की बबल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप देख रहे हो, ये बबल्स आपको दिखाई दे रही है इस तरह से। सो हमारा जो लंग है, और लंग इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, इट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस सच टाइप्स ऑफ टाइनी बॉल्स which are present at the end of these bronchioles, and these tiny balls are called alveoli. What is it called? It is called alveoli. Okay, so these, what does it do? Okay, later we will see. And below at the bottom of here you see this is the diaphragm. Okay, this diaphragm causes the expansion and relaxation of this chest cavity. Okay, so this is our respiratory system. Now what happens? What is the mechanism of this respiration? Air enters through the nostrils, the hairs and mucus traps the dust particles. It then passes through the pharynx, larynx, trachea, bronchi and enters the lungs. The trachea has the trachea has rings of cartilage which prevents it from collapsing. Okay, just see here.
this trachea, it bears, here you see this trachea, it having the rings of cartilage here. Okay, cartilage you have gone through in ninth. Okay, these are hard muscle like particles. Okay, so this cartilage, what is the role of cartilage, why cartilage is present here? Okay, you know, where you blow in a balloon, it expands, and when the air is sucked from the balloon, it collapses. Okay, so when no air is present in this trachea, what will happen? This will collapse, ये सिकुड़ जाएगा. Okay, then what? So to prevent this trachea from collapsing, the rings of cartilage are present here. Okay, our ear pinna and the nose, it is also made up of the external nose, it is also made up of cartilage. So it is stronger than the muscles. So it is rigid than the muscles. So it prevents the trachea from being collapsed. Okay, this is the role of this presence of rings of cartilage. It is also an important question, the role of rings of cartilage in trachea. So the trachea has rings of cartilage which prevents it from collapsing when there is no air in the trachea. Okay, इसको collapse होने से बचाती है trachea को कौन? Rings of cartilage जो trachea में present है. The bronchi divides into smaller tubes called bronchioles, which ends in tiny air sacs called alveoli. Okay, ये this is alveoli, you see. जो terminal part है bronchiole का, it ends into this bubble like structure, this is called alveoli. Okay, and this air is contained into this sac like alveoli. The alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases takes place. The alveoli helps to increase the surface area of the for the exchange of gases. Okay, so the main role of this alveoli is these are the sites of exchange of gases. It is also an important MCQ or objective question. एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है वन वर्ड आंसर वाला, that what is the role of alveoli, or what name the site of exchange of gases in the lungs. So these alveoli are richly supplied. Here you see arterioles and venules are present here, and these are in close contact with this alveoli. And what happens? From these bronchioles, the air are passed to these air sacs and the volume of this alveoli increases. Then what happens? These capillaries, bronchioles and venules are arterioles and venules are here. These blood capillaries are in close contact with this air, and what happens? In this air present in alveoli, it is rich in oxygen. Okay, and the blood, there is the lack of oxygen, the concentration of oxygen more inside the alveoli and it is less in the blood. So what will happen? This oxygen, it will diffuse, remain diffusion. Okay, movement of substance from higher concentration to lower concentration. So these particles of oxygen, they move from higher concentration alveoli to this blood capillaries. Okay, in this way oxygen is supplied to the capillaries. And what happens? The venules, the impure blood, deoxygenated blood coming from the heart, it is pumped to the lungs, and here these venules, they these arterioles, this pulmonary artery which brings deoxygenated blood, here the concentration of carbon dioxide is more in these blood capillaries, these venules, arterioles. So these, when come into contact of this alveoli, they diffuses CO2 from the CO2 is diffused from these capillaries to the alveoli. Okay, so alveoli में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ब्लड में कम है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, alveoli में कम है. Okay, so this carbon dioxide is simply diffused from the blood capillary to this alveoli. Okay, CO2 will diffuse inside the alveoli. CO2 will diffuse inside the alveoli
and oxygen which is more in this alveoli, it diffuses out in the blood. Okay, in this way the exchange of oxygen takes place. I think you got it. जो हवा हमने ली, जो एयर हमने इनहेल की, that air from trachea it goes to the bronchioles and ultimately it goes to the alveoli. Here in the alveoli the concentration of oxygen is more, okay, in comparison to the blood. So oxygen diffuses out in the blood from alveoli to the capillaries. Then the amount of carbon dioxide is more in these capillaries, so this carbon dioxide simply diffuses into this alveoli. So ऑक्सीजन देकर अब यहाँ पर क्या हो गया, इस alveoli में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, विच विल बी एक्सपेल्ड आउट. यहाँ से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल जब किया जाएगा तो ये यहाँ से ट्रैकिया और नोज से होते हुए इट विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. इस तरह से कंटिन्यूसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली गोइंग ऑन बॉडी में होते रहता है. एक बात का ध्यान रखिए, एल्वियोलाई कभी भी खाली नहीं होती है. देयर आर the residual air is always present in the alveoli. Okay, so the continue this exchange of gases is being carried out on every moment of time. Okay, यहाँ पर कुछ ना कुछ रेसिजुअल एयर बनी रहती है जिससे कि ये डिफ्यूजन अपना होते रहता है. ओके, एंड एल्वियोलाई, जस्ट थिंक व्हाई देयर दिस लंग इज नॉट वन बिग बबल, बिग बलून लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, एंड इंस्टेड इट इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल सेक्स. दिस स्मॉल एल्वियोलाई, इतने सारे एल्वियोलाई से क्यों बना है? ओके, द रीजन इज अगेन सेम, दिस एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन, this exchange of gases is also a surface phenomena, and instead of one big bubble, big balloon, there many bubbles are there, many alveoli are there to increase the surface area, which favors the exchange of gases between blood capillaries and this alveoli. Okay, so I hope आपको ये समझ में आया है. Okay, so इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में. नाउ हाउ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे है, इसको आप एक सिंपल से इस मॉडल से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ब्रीथिंग हमारे बॉडी में होती है. व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स. Okay, what happens? The diaphragm, the bottom part is diaphragm, it contracts and it moves downward, by which what will happen? The volume of this chest cavity increases. और जब chest cavity का volume increase हो जाएगा, so these alveoli are present, the lungs are connected with the outer environment through this trachea and nostrils. So what will happen? जब वॉल्यूम बढ़ेगा, देन ऑटोमेटिकली द लंग्स एक्सपेंड, द एल्वियोलाई एक्सपेंड्स एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट इज सक्ड इनसाइड. ओके, देन व्हाट हैपेंस? दिस डायफ्राम आफ्टर सम टाइम, द message from brain comes to the diaphragm and diaphragm again moves upward. Okay, and the muscles of diaphragm it relaxes, which result in it decreases the volume of chest cavity, so the air is expelled out. So in this way inhalation and exhalation takes place continuously. और इसको सिंपली समझने के लिए हम इस मॉडल से आप और अच्छे से समझ सकते हो. दिस इज अ बॉटल हैविंग अ ट्यूब, द ट्यूब इज बाइफर्केटेड, इट इज जस्ट लाइक, yes, you can understand, it is like trachea and it is these bifurcated two branches, it is like bronchi, and these balloons it resembles lungs. Okay, and here the bottom is cut and here the diaphragm is made of balloon, it is the membrane of polymer membrane of balloon. When this balloon is stretched out, अगर हम इस बलून को बाहर खींचें तो सोचिए क्या होगा. इसको करके देखिएगा आप, इसको बनाइएगा, इसको करके देखिए. जब बलून को नीचे
प्रेस किया जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हियर द वॉल्यूम इंक्रीजेज. सो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम what will happen, this air outside the pressure is same but here the volume increases, so here outside the pressure decreases. So to compensate this pressure, air moves from outside to the tubes and these balloons expands. ओके जब हम डायफ्राम को नीचे प्रेस करेंगे तो ये बलून ऑटोमेटिकली फूल जाते हैं. जब डायफ्राम को वापस पोजीशन पे लाया जाएगा तो ये बलून्स वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे इस तरह से हो जाएंगे. गॉट इट. सो इट इज सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ ब्रीथिंग मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. Okay, so one by one we have covered all the aspects of human respiratory system. We have discussed how this breathing takes place. We have discussed how this exchange of gases takes place. I hope you understood this. And we have seen the different modes of this breakdown of glucose molecule. 3 pathways are there, all we have discussed, and 2 modes of respiration are there, aerobic respiration and anaerobic respiration. I hope you understood this. Okay, go through this, it is very interesting. Okay, so आप स्टडी करते रहिए, बी क्रिएटिव, बी फंक्शनल, आइडल नहीं बैठना है, अच्छे से अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए. ओके, गुड डे, नमस्कार.